हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो नंबर 10। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आजकल पाइथन कौन कौन यूज़ कर रहा है, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो कि पाइथन को यूज़ कर रही हैं, राइट। तो हियर नंबर वन गूगल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो कि पाइथन पे बेस्ड हैं। तो पाइथन आजकल काफ़ी बूम पे है और गूगल तो इस पे 2017 से काम कर रहा है। ओके, देन याहू भी इस पे काम कर रहा है एंड यूट्यूब पे चल रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, उबेर यूज़ कर रहा है, नासा यूज़ कर रहा है, ड्रॉप बॉक्स यूज़ कर रहा है, क्यूरा यूज़ कर रहा है और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, आपका बिट टोरेंट हो गया, आई रोबोट हो गया। दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया भर के बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं जो कि पाइथन को आजकल यूज़ में ले आ रहे हैं। वो उस पर अपने प्रोजेक्ट, अपने जितने भी उनके एग्जिस्टिंग या जितने भी नए प्रोजेक्ट हैं वो उस पर डेवलप कर रहे हैं। देन गूगल की अगर बात करें तो गूगल मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पाइथन इन इट्स वेब सर्च सिस्टम। ओके, पॉपुलर यूट्यूब वीडियो शेयरिंग सर्विस इज लार्जली रिटन इन पाइथन एंड द ड्रॉप बॉक्स स्टोरेज सर्विस कोड बोथ इट्स सर्वर एंड डेस्कटॉप क्लाइंट सॉफ्टवेयर प्राइमरली इन created in Python, and the Raspberry Pi single board computer promote Python as its educational language, and the widespread BitTorrent peer-to-peer file sharing system began its life as a Python programs. So Google's application engine web development framework uses Python as an application language. So Maya Movie Maker is a powerful integrated 3D modeling and animation system providing a Python scripting API. So Intel, Cisco, HP, Seagate, and Qualcomm, IBM, these are the famous tech companies now using Python for hardware testing, and NASA and so many other tech companies using Python for scientific and programming tasks. Okay, so you can see these big companies are using Python nowadays. So thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel.